मिश्रा और द स्लो कैफे में आपका स्वागत है। ये वो काल्पनिक जगह है जहां मैं और आप अक्सर मिलते हैं और आजकल तो बड़ा जाड़ा है, लेकिन फिर भी खचाखच भरा रहता है स्लो कैफे। और आज जो मेरी मेहमान है, बहुत ख़ास मेहमान है और बड़ी रोचक बातें होने वाली हैं। वो गंगा जी के किनारे रहती हैं, ऋषिकेश में। लेकिन आज टहलते टहलते सामने से गुजर रही थी द स्लो कैफे के, तो हमने उनको आमंत्रित किया और हम आ गए। तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ साध्वी भगवती सरस्वती जी का। How are you? I am wonderful, and it's so wonderful to be with you today. So wonderful. Thank you. Thank you so much. So the Slow Cafe is this imaginary place, and there are people all around us sitting at on the tables and listening in, eavesdropping, while we are having this interesting conversation. I know it's going to be very interesting. So मैं बीच बीच में हिंदी में बात करूंगा, चूंकि आप हिंदी में भी बोल लेती हैं और मैं अंग्रेजी में बात करूंगा। जी जी जी। तो साध्वी जी परमार्थ आश्रम में रहती हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप सब समझिए कि ऋषिकेश का एक अगर प्रतीक मैं मानूं तो बहुत से लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ की आरती जो होती है स्वामी जी के सानिध्य में, वो आप लोग बहुत से लोग गए होंगे, मैं भी गया हूँ कई बार। और सबसे मज़ेदार बात, सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगती है कि जब हम आश्रम में जाते हैं या स्वामी जी से या साध्वी जी से मिलते हैं, तो faith to me acquires a new meaning, where speaking about spirituality could also be speaking about the environment, about us, about success, about education. और वो मुझे बड़ा बहुत खूबसूरत लगता है। तो साधु जी, let's start with that. How do you see faith, and is it slightly different from what many other people see it as? Absolutely, Neeleshji. It's unfortunately लोगों को लगता है कि चाहे हम faith कहते हैं, चाहे spirituality कहते हैं, चाहे religion कहते हैं, that it's in a box, that it has to do with मैं अपनी मंदिर में या अपने गुरुद्वारा में या अपनी चर्च में या अपने मॉस्क में मैं कौन सी prayers recite करती हूँ या कौन सी श्लोक या मैं कौन सी पुस्तक दिव्य मानती हूँ. That it's all about what's our scriptures, what are our prayers, what are our rituals. और वो भी है. Obviously, the different faiths and traditions have different scriptural texts and different beautiful prayers and mantras and rituals for us to engage in. But those are ways of demonstrating faith, of experiencing faith. They're not the beginning and the end of faith. And as you mentioned, for example, the environment, जो पूज्य स्वामी जी हमको सिखाते हैं, जो touched me so deeply from the beginning, is the divine. That divine, by any name, any form, whatever path, whatever faith, lives in all. The divine is the creator, but the divine is also the creation, right? In the Upanishads, there's a beautiful teaching that says, Isha vasyamidam sarvam, yat kincha jagatyam jagat, tena tyaktena bunjita, ma gritaha kasya svidhanam. And it means everything in the universe is pervaded by the divine. Everything, everywhere. Therefore, move very carefully. Remember,
this divine creation is not yours to consume and abuse and discard. This is the divine, and it belongs to the divine. So tread very lightly. It's sort of the scriptural version of take only memories and leave only footprints. And when you are deeply immersed in not just that as a teaching, but that as an experience, you serve, you protect, you preserve, because the entire creation means obviously all of our human sisters and brothers, but it means also every species. It means also generations to come. They're all self. For me, the way that I love to think about it is, if anything happens in the body, the rest of the body takes care of it. So if I have, an itch on my face, I'll scratch it. Or if, God forbid, a bee stung me, immediately my hand would come like this. Or if I trip and I fall and I hurt my right leg, my left leg will take up extra weight. We call that limping. But nobody has to say, oh, beautiful, humanitarian, wonderful left leg, would you mind? Would you mind taking up a little bit of extra weight? The left leg intuitively understands the right leg is self. In the same way that my hand understands the face is self, or the elbow is self, or whatever I need, it's self. And so we respond to the world with the awareness that the world is self with a capital S, the divine. So we serve. Wow. And yours has been a very fascinating journey. You were born in America, and now you're in one of the holiest places on earth. You want to tell me a bit about that journey and Sure. that life, and how you transitioned to this life, this country? It was really just God's grace. I would love, my ego would love to say, oh, I was deeply spiritual from birth, and I, growing up in the materialism of Los Angeles, I prayed to God to give me a guru and to take me to the sacred Himalayas where I could really live a spiritual life. And it sounds nice, but there's not a shred of truth in it. I grew up in a very wonderful, very beautiful, very privileged American family. I had really everything that we are taught one needs for a successful and happy life. Financial prosperity, a great education. I graduated from Stanford. I was then in the midst of doing a PhD, and all of the opportunity, all of the access, all of the luxuries, all of the conveniences. And we're taught very clearly, this is what you need. And so what my friends and I were, I've now begun referring to it as happy by default, meaning we had the things that we were told one needs to be happy. Therefore, we assumed we must be happy. There was never a question that one might have these things and not be happy. Or if you weren't happy, it was just a matter that you didn't, in that very moment, have them exactly right. So happiness, we accept, comes, for example, from being invited to the right parties. Didn't get invited to the right party this weekend, therefore not happy. Happiness, we accept, comes from material possessions. By the time you went back to the store to buy that skirt you really wanted, someone else had bought it. Skirt is gone. Happiness is gone.
So there was an acceptance of the underlying principle that happiness comes from owning these things, success in a model that is based on the grade I got on an exam, the university I get accepted to, the graduate program I get, the grades you get on your GRE exams or your SAT exams. You know, we accept the premise that that's what gives us happiness. And so our waves of happiness and sadness are contingent upon those things. The dilemma is those are not what bring happiness. And whether you are looking at deep, ancient scriptural wisdom from every religious tradition in the world, whether you're looking at popular, great, classic lyrics to wonderful songs that we all grew up with, whether you're looking at poetry or you're looking at personal experience, these are not the things that bring happiness. And I wish that I could say that prior to coming to India, I knew that, but I didn't. I was 25. I was on a path. Things were going very well. I was getting the right scores, getting acceptance into the right places, owning the right things. Things were going very well according to the happiness equation. And I came to India actually only because the person I was traveling with very much wanted to come to India. And I had spent a lot of time traveling in Europe. I had spent a year in South America in between my undergraduate and graduate program. So I love to travel. I had traveled all over. And India had never occurred to me, but when it was suggested, the only reason I agreed was I was a very, very, very strict vegetarian. My friends used to call me vegetarist and very, very pakka. And so traveling in places where you don't speak the language, where you're not cooking for yourself, as a very strict vegetarian is very difficult. पूरा विश्व में मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि वो लोग कहाँ चाहे मछली हो, चाहे चिकन हो, चाहे मीट हो, कहाँ डालते हैं in seasoning packages. मतलब you order a vegetable soup, बाद में पता लग जाता है कि actually नमक, जीरा, हल्दी, इलायची के बजाय उन्होंने एक powdered seasoning packet खोल के डाल दिया, जिसमें it's beef flavoring or chicken flavoring. When I was in Ecuador in South America, I used to eat beans and rice every day at this little cafe. 2-3 महीने के बाद मैंने पता लगाया कि जो चावल पानी में भिगोने के बजाय, instead of cooking it in water, they cooked it in chicken broth. So फिर मैंने मतलब mental, I couldn't eat anything. I was so scared. So when India was suggested, मैंने इसलिए हाँ किया था कि इतना विश्वास से I knew that in India people know what vegetarianism means and they know not to put it in things, and nobody's going to sneak eggs or fish or chicken broth in food. So I actually agreed to come, as funny as it is, even embarrassing on some levels as it is 25 years later, only because I knew that I could eat happily. That for the semester we had taken to come and travel, kam se kam main theek se kha paungi. So I agreed to come. And मैं आपको यहाँ एक सेकंड रोकूंगा और जो हिंदी भाषी हमें सुन रहे हैं उनके लिए मैं समराइज करना चाहूंगा अब तक की बहुत रोचक यात्रा। साध्वी जी ने बताया कि उनका जन्म हुआ था लॉस एंजलिस में और एक वेल टू डू परिवार, धनाढ्य परिवार में, बहुत अच्छी उनकी पढ़ाई हुई है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया की सबसे
प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से है, वहाँ पर पीएचडी कर रही थी और दुनिया में कई कई जगह घूम के आई थी। लेकिन एक चीज जो उनको हिंदुस्तान से अनजाने में तब वो जानती नहीं थी, जोड़ रही थी, वो थी कि वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन थी। और जब उनको अपने मित्र के साथ यहाँ आने का मौका मिला तो एक ही चीज उनको आकर्षित कर रही थी कि भाई यहाँ पर चलो खा पाऊंगी मैं ठीक से, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं होगा कि खाने में कोई चिकन या कोई और मसाला होगा जिसमें मीट होगा। तो ये थी। आगे सुनते हैं, व्हाट नेक्स्ट साधु जी। फिर हम लोग, ये 1996 की बात थी जी। और मैं भूल गई कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी में बात करनी है। नहीं, आप सहज रहे हैं बस। हाँ जी, ठीक है। तो 1996 की बात थी, तो उसी समय गूगल नहीं था, कोई ऐसा सुविधा नहीं था कि आप ऑनलाइन जाओ, इंडिया डालो और फिर इतने सारे सजेशंस आने लगेंगे, अलग अलग आइडियाज आने लगेंगे। तो हमारे पास एक करीब 500 पेज गाइड बुक था, लोनली प्लैनेट। राइट। तो दिल्ली में हम बैठ के लोनली प्लैनेट गाइड बुक मैंने खोल दिया और मैंने कहा ऋषिकेश चलो, बस ऐसे जस्ट गाइड बुक ऐसे खोला और ऋषिकेश। और I was always a nature person, मतलब बचपन से कोई पुराना जन्म में जरूर पहाड़ी थी। और वैसे लगता है कि शायद सारे पुराने जन्म में पहाड़ में रहती थी, क्योंकि बचपन से I love the mountains, I love camping, sleeping in the dirt, trekking. So जब ऋषिकेश के बारे में पढ़ा तो it mentioned mountains, it mentioned river. मुझे ये मालूम नहीं था कि गंगा दिव्या है, कि गंगा माँ है। बस इतनी मालूम था कि एक सुंदर सा नदी है। और ये भी मालूम नहीं था कि हिमालय कितने sacred है। बस इतनी मालूम था कि सुंदर पहाड़। But actually that was enough. River, mountains, हमको लगा कि चलो बहुत सुंदर लगेगा। And also, I already was studying yoga. I was studying yoga already in San Francisco. तो जब ऋषिकेश के बारे में पढ़ा तो ये भी लिखा हुआ था कि it's a place of yoga. तो ये भी हम सोच रहे थे कि चलो योग सीखेंगे। और ये भी था कि दिल्ली से नजदीक, तो it was easy to come. और हमको लगा कि चलो पहले ऋषिकेश चलेंगे और वहां पे हम थोड़ा भारत घूमने का प्लान बनाएंगे बैठ के। तो ऋषिकेश आए और दिल्ली से एक होटल चुन लिया। अभी इतने सारे, जहाँ परमार्थ निकेतन आश्रम है, अब इतने सारे होटल्स आने लगे पूरे ऋषिकेश में, लक्ष्मण झूला, राम झूला। लेकिन उसी समय हमारा पूरा स्वर्ग आश्रम राम झूला की साइड, जहाँ परमार्थ निकेतन है, उसी समय there was only one hotel. बाकी सारे केवल आश्रम्स were there. All of the other hotels were गंगा जी के पार, मतलब downtown side of ऋषिकेश। और वो होटल का नाम था Green Hotel. So I was also already a very avid and ardent environmentalist. मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पहले अर्थ डे सेलिब्रेशन मैंने ऑर्गेनाइज किया था वहाँ स्टैनफोर्ड में। तो I already was a big environmentalist. तो मुझे लगा ग्रीन होटल का मतलब कुछ बड़ी इको फ्रेंडली होगा। तो मैंने कहा हम ग्रीन होटल में रुकेंगे। Now, when the taxi dropped us off at Ramjula, गंगा जी के पार, उन्होंने हमको नहीं बताया कि एक बोट है, बोट में बैठ जाओ। ये भी हमको नहीं बताया कि चलो मैं एक कूली करवा दूं आप लोगों के लिए। उन्होंने केवल इतना बोला कि you cross bridge। तो हमको सारे सामान उठा के रामझूला क्रॉस करना पड़ा। My God.
मुझे याद है कि I was thinking कि really you had to choose the only hotel in this entire city that required us to carry our luggage across a bridge. Like what were you thinking? What were you thinking? But ये जब हम destiny के बारे में बात करते हैं, कर्म जी के बारे में, जी तो हाँ, मुझे वही होटल चुना पड़ा that required us to carry our luggage across the bridge. तो right होटल में पहुंच के I was very tired, I was hot, हम सारे सामान उठा के रामचूला क्रॉस करना पड़ा. So मैंने कहा कि I'm going to the river to put my feet in. I'm going to put my feet in the river. बस इतना था. मैं थोड़ा सा fresh हो जाऊंगी. जी नदी के पास बैठ जाऊंगी. थोड़ा सा refreshed ho jaungi. I will feel better. I got down to the banks of Ganga. Ganga ji ki darshan ki. And I started crying. oh So deeply I was crying. And they were not, obviously, they were not tears of sadness. yeah But it was not even this tears of like, oh, happiness like that. They were just tears of being in the presence of the truth. I've noticed in my life, whenever moments are there of deep, deep truth, आंखों में आंसू आते हैं. And that moment was a moment of such deep truth that I cried and cried and cried and cried. And I knew I've come home. I knew wow. ये मेरा घर है. I knew मुझे यहाँ रहना है. And I didn't know how, and I didn't know why, and I didn't know where. But I knew I've come home. So that was the extraordinary touch of Ganga. And I spent many days just sitting on the banks of Ganga, meditating. Now, वो meditation ki shabd, I would not have used it then. But ab, looking back in hindsight, I say, हाँ, मैं ध्यान कर रही थी. But for me, it just felt like this is where I want to be. Right. This is where I need to be. And I would sit on the banks of Ganga, subah se sham tak. Dhyan kar rahi thi, ro rahi thi, ro rahi thi, ro rahi thi. And I started, there are pathways between the hotel and the banks of Ganga. और सबसे पहले जब मैंने होटल वाले से पूछा कि मैं नदी के पास कैसे जाऊं, तो उन्होंने मुझको एक alleyway से भेजा between ashrams. And now with Puja Swamiji's Swachh programs and all of the cleanliness programs, अब सब बहुत साफ हो गया. But उसी समय it was not very clean. It was a typical मतलब Indian gully. आप सोचो कोई भी गली कैसे लगेगा. So I didn't really enjoy walking through this gully very much. And one day I found out that there's a parallel path that also can take me from the hotel to the banks of the river. And I started using that. And that pathway is Parmarth Nikatan. And it was so beautiful and so clean and so lovely. And I was just using it as a pathway to and from the river. और एक दिन एक आवाज सुना, you must stay here. And मैं ऐसे पीछे देखने लगी कि you must stay here. Excuse me, किसने कहा ये? You actually heard, or was it a voice in the head? I actually heard a voice. Oh. You must stay here. तो मैं ऐसे मुझे लगा कि कोई बोल रहा है. कोई नहीं था. तो फिर मुझे लगा कि I must have
imagined it, invented it. थोड़ा सा और आगे बढ़े, फिर दोबारा मैंने सुना आवाज, You must stay here. मैंने फिर मोड़ के पीछे देखा, कोई नहीं था. एक और पीस था कि जब हम एयरप्लेन में थे सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली, तो उसी समय मेरे दिमाग में ये आए कि मैं क्यों जा रही हूँ. ये कोई मतलब नहीं है. मुझे कुछ भारत के बारे में मालूम नहीं है, ना कोई इंटरेस्ट था मेरे. मैं पूरा विश्व घूम के जा रही हूँ ताकि मैं वेजिटेरियन खाना खा लूँ. What am I doing here? Right. And I was never a wanderer. Sorry. Take it down. I was never a wanderer, never someone who did things just haphazardly. Yeah. So plane में मैं सोचने लगी कि मैं क्यों जा रही हूँ. And what I understood was, even though I was not religious, I always believed that there is a planner, a capital P planner. Because I had spent a lot of time in science laboratories, chemistry laboratories like that. And जो मैंने देखा laboratory में कि you put all the items together एक छोटी सी crucible में आपके Bunsen burner के ऊपर, और usually कुछ नहीं होता. आग चलाया, देख रहे हैं, कुछ होते ही नहीं है, फिर कुछ और डाला, फिर finally शायद एक bad smell आता है या थोड़ा सा smoke आता है, लेकिन जीवन नहीं आता है. You don't get life like that. And what I realized from a scientific perspective was, even knowing everything we know about life, everything we know about the cells of the body, forget a human body, even just a leaf, like one little leaf. Oh, you can't see my leaf, but anyway, one little leaf. You take one leaf. Now, botanists know, scientists know exactly. You see, एक leaf में how many molecules of carbon, of hydrogen, of oxygen, of nitrogen, and how are these molecules bonded together? They can do them with, styrofoam balls and all of those science models. Yeah. They can fear it. Right. Ex science laboratory में you cannot create a leaf. सब कुछ जानते हुए भी we cannot create life. Hundreds of years of modern science के बाद एक human being बहुत दूर की बात है. एक मच्छर हम create नहीं कर सकते. एक leaf हम create नहीं कर सकते. एक amoeba create नहीं कर सकते. The very best we've been able to do with all of our science is basically make a Xerox copy. Right? Kabhi we've had some successful cloning experiments. They can go, hey kya? Just like Xerox copy humne banaya, theek hai? But so from a scientific perspective, I always deeply believed there is God. What is God? How is God? I don't know. But there is this capital P planner. क्योंकि उनके बिना कोई भी साइंस लैबोरेटरी में होते नहीं है. और अगर साइंस लैबोरेटरी में नहीं होता, how are we supposed to believe that एकदम randomly molecules hitting each other suddenly life आ गया? और सब कुछ जानते हुए भी हम create नहीं कर सकते हैं, लेकिन randomly होते. It didn't make sense to me scientifically. Therefore, उसी airplane में जब मैंने सोचा कि why am I going? I knew कि there must be a plan. But just that I didn't know what the plan was. और तो मैंने एक वचन लिया airplane में.
I will follow my heart. I will listen to my heart. And I will keep my heart open. Because if I don't, फिर कोई मतलब नहीं है. I might as well go back. Right. Back to California. वहाँ पे भी खूब सारे बढ़िया vegetarian खाना मिलते हैं, Indian खाना भी मिलता है. There's no reason to be घूम रहे हैं in a foreign country if I can't keep my heart open. So now you fast forward back to जब मैंने आवाज सुना, वो भी दूसरी बार you must stay here. Though I was just about to ignore it again, to pretend कि I didn't hear it. फिर जब मुझे याद आया कि oh, मैंने वचन लिया कि I will keep my heart open. And if I can't keep my heart open, कि मैं वापस चलूंगी. तो मुझे लगा कि मैं अभी भी आया हूँ. एक हफ्ते भी नहीं हुआ. वापस जाने का कोई मतलब नहीं है. But then it means I have to keep my heart open. So आवाज को सुनने के बाद फिर मैं ऊपर देखने लगे और मैंने देखा एक साइन था, ऑफिस लिखा हुआ था. वो भी इंग्लिश में लिखा हुआ था, ऑफिस. तो मैं ऑफिस में चले गए. मैंने कहा कि I want to stay here. और that's मतलब कहानी बहुत लंबी है, but this is how it all started. And then finally about एक हफ्ते के बाद पूज्य स्वामी जी की दर्शन हुई. और जब उनकी दर्शन हुई तो then I understood कि it is here, उन्हीं की सनिधि में, उन्हीं के चरण में, that I'm supposed to be, that I'm supposed to learn, that I'm supposed to serve, that I'm supposed to be. So it's been a very glorious and grace-filled experience. कितनी अद्भुत है कहानी. और जो हमारे साथी हिंदी भाषी हैं उनके लिए भी मैं समराइज करना चाहूंगा कि मैं अक्सर अपने जीवन के बारे में भी ऐसा कहता हूं कि मेरा जीवन जो है वो इत्तेफाकों का सिलसिला है. इट्स अ सीरीज ऑफ कोइंसिडेंसेस. बट I also have a great sense of destiny. प्रारब्ध में मैं विश्वास करता हूँ. मेरी जिंदगी ने अलग अलग मोड़ लिए हैं जो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था. लेकिन आप what are the odds that an American woman जो बेमन से आ रही है, ऐसा नहीं कि this is a journey that she's like really excited about, वो जा रही हैं, चलिए ठीक है, और गंगा जी के तट पर बैठी हैं. और एक हफ्ते के अंदर मैं वही पूछना चाह रहा था कि what was the time span between your coming between your lugging your luggage across that bridge and this moment. So एक हफ्ता आप कह रही हैं लगभग. तो कमाल की बात है कि और आप वहां बैठी और जार आंसू निकलने लगे आपके और आप समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है. ऐसे बहुत से लोग होंगे इस वक्त भी इस बातचीत को जो सुन रहे होंगे जो इससे रिलेट नहीं करेंगे. और ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कुछ अपना सा, कुछ अव्यक्त सा, अनस्पोकन सा देखेंगे. Do you believe, I mean, I know the answer, but do you believe in destiny? Absolutely. Absolutely. But I also believe we are creating our destiny. कभी-कभी लोगों को लगता है जब हम कार्ड में या किस्मत के बारे में बात करते हैं तो मैं सुनती रहती हूँ लोग कहते हैं ओ चलो मेरा भाग्य में नहीं है या किस्मत में नहीं है या all of these things. The dilemma is हम लोग रोज हर मिनट हर मोमेंट अपनी ही डेस्टिनी क्रिएट कर रहे हैं. जब हम प्री डेस्टिन्ड के बारे में बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि प्री का मतलब
कि जैसे एक ऐसा समय हुआ हजारों साल पहले जिसमें उसी समय कहीं आकाश में किसी ने लिखा हुआ है कि हजारों साल के बाद एक ऐसा व्यक्ति आएंगे और यही होगा, यही होगा, यही होगा, यही होगा, और फिर उसके बाद nothing can be changed. But ऐसे नहीं है. Yes, definitely हमारा कुछ long term karma है. There's basically, I won't go into the details, but basically we have 3 types of karma. जो long term है, जो पूज्य स्वामी जी कहते हैं जैसे एक long term FDR है. आपने पैसा जमाया और आपको बहुत सारे साल के बाद मिलेगा, या in this case जन्म के बाद मिलेगा. Then you have your more short term FDRs. Those are things like आज खूब पढ़ाई मैंने किया तो फिर कल जब मेरी एग्जाम होगी तो I do very well on the exam. So, ऐसे नहीं कि किस्मत में था या भाग्य में था, मैंने वो भाग्य क्रिएट किया by study. आज मैंने बहुत काम किया, तन से मन से बहुत काम किया, फिर कल या परसों या नेक्स्ट वीक कुछ सफल होता, वो भी मैंने क्रिएट किया. फिर कुछ इमीडिएट कारण भी है, जैसे किसी को थप्पड़ मारे, likely they will slap you back. या किसी को shut up बोले, likely they will tell you shut up. तो वो हमने जैसे immediate कारण है. But when you think about destiny, अगर हम आज के बारे में बात करेंगे तो कुछ मेरा आज की डेस्टिनी बहुत पुराना था, बहुत पुराने जन्म से, लेकिन काफी डेस्टिनी was from this life. So if you take my particular coming to Rishikesh, let's say, तो naturally कुछ पुराना जन्म था, नहीं तो वो एक्सपीरियंस नहीं होती. बहुत लोग गंगा जी के पास जाके बैठ जाते हैं and then they go home. तो कुछ है पुराना जन्म से डेस्टिनी, जिससे मेरे को जैसे गंगा जी की दर्शन की वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो अवेकनिंग, वो एक्सपीरियंस हुआ. But what you also have to realize is जब मैंने इंडिया आने की अग्री किया या उससे पहले जब मैंने वेजिटेरियन बनने निर्णय लिया, that then led me to say yes to come to India. जब मैंने पुस्तक खोला और बिना कुछ मालूम होते हुए केवल courage के साथ, open heartedness के साथ, adventurous spirit, fearlessness के साथ मैंने कहा चलो. और फिर जब हम पहुंच गए और ड्राइवर ने कहा यू क्रॉस ब्रिज, हमने कुछ डाउन पेमेंट तो नहीं किया, कोई डिपॉजिट तो नहीं भेजा था दिल्ली से, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं दिया. We obviously had the opportunity to say to the driver, नहीं forget it. आप पलट के वापस जा सकती थी. हाँ, कोई दूसरे होटल में ले जा. जी. हम जा नहीं रहे वहां, ये तो बहुत मतलब दिक्कत की बात है, छोड़ो इसको, हमको कहीं और होटल ले जा. But we didn't. So if you look at all of the different pieces, you realize that yes, definitely something was there from the past, but also every minute, every moment. Neelesh ji, when we say yes to life, kya hote humko? Is we live in boxes. We live in boxes based on पड़ोसी क्या कहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ से आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्यों चाहिए ताकि पड़ोसी मेरे को रिस्पेक्ट करेगा. जब नया गाड़ी खरीद लूंगी या कोई नया साड़ी या I have diamonds, तो फिर
लोग मेरे को रिस्पेक्ट करेंगे, लोग मेरे को लाइक करेंगे, लोग मेरे को वाह वाह बोलेंगे, फिर मेरे बच्चे लोग उससे शादी करनी चाहेंगे, फिर हम इसी तरह से सोचते हैं जी कोई नहीं सोचते हैं कि सचमुच मेरा धर्म क्या है, सचमुच मेरा दिल क्या कहते हैं. We live and we die based on सामने वाले क्या सोच रहे हैं, सामने वाले क्या कहेगा. And so our destiny is something we are creating every minute and every moment. With our courage. देखो गीता जयंती आने वाले 25 को. गीता जयंती में इतने obviously teachings है, ये तो गीता है, लेकिन कोई मूल teaching अगर कह सकते हैं तो fearlessness, अभियान, stand up. And what I love about it is भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कोई ऐसा गारंटी नहीं दिया. He could have said वो तो भगवान है, वो बड़े आराम से कह सकते थे कि चिंता मत करो, तुम जीत जाओगे, परेशान तो हो जाएगी लेकिन जीत जाओगे, end of the day जीत जाओगे. But he didn't say that. He didn't tell Arjun that. When Arjun said कि हो सकते मैं मर जाऊंगा, he said हाँ हो सकते, ये भी हो सकते. ऐसे नहीं बोला कि नहीं चिंता मत करो, you will not die. What he told him was, yes, हो सकते, लेकिन this is your dharma, stand up. Be fearless. And when we speak about destiny, so many of us are actually not fulfilling our destiny. So many of us, maybe we have a past karma that is supposed to bear fruit in some way. But we decide कि चलो, I'm going to sit this one out. डर जाते बैठ जाते हम लोग. कम से कम कोई मेरा बुराई नहीं करेगा. जी. कम से कम कोई शिकायत नहीं करेगा. कम से कम. But we lose our whole lives. So you have to realize we are creating our destiny. This moment right now is the for next week's predestined occurrence. आप जो अभी कर रहे हैं is the for tomorrow's predetermined experience. So every minute and every moment we are creating that. एक दो बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं और एक दो लोग सवाल पूछ रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन एक जैसे आपको एक अपना सेंस ऑफ पर्पस, आपकी कॉलिंग जो है वो मिली, और ऐसे बहुत से लोग हैं उनकी कॉलिंग अलग हो सकती है. इट कुड बी बिकमिंग अ म्यूजिशियन और पेंटर, और बट they're living another life. Some could feel trapped in that life. You're in a corporate job, but you actually want to be a singer. And some might not realize कि वो उनकी calling कहीं और है, और वो जो जीवन जी रहे हैं वो किसी बैंक में काम कर रहे हैं, लेकिन असल में उनको तो किताबें लिखने के लिए उनका जन्म हुआ था. उस दिन अमीश त्रिपाठी हमारे दोस्त हैं बता रहे थे, भाई अगर आप मेरा वो अवतार देख लेते पुराना वाला, मैं इतना गुस्सैल था और इतना कम्पिटिटिव था कि ये मेरी तनख्वाह नहीं मिली, और अब देखिए वो इज द बेस्ट सेलिंग ऑथर. तो ये सवाल एक पूछा है राहुल बाली ने, वो कह रहे हैं कि what are the signs that one should observe to differentiate between an attraction and a calling? Beautiful, beautiful. तो उससे पहले, I will come there, I promise, but उससे पहले मैं आप नीलेश जी जो कह रहे थे, I wanted to just respond to that for a moment, because one of the mistakes we make is to think कि अपनी job या अपनी career must be the way जिससे मैं अपनी purpose fulfill करूं या जिससे मैं अपनी dharma fulfill करूं. कभी-कभी a job is just a job.
Kabhi kabhi it's just a way to put food on the table. Right. Absolutely. Your duty, your dharma as a mother, a father, or a son, a daughter, if there are people who are dependent on you, your duty is to feed them. तो आप ऐसे मत सोचो कि नहीं मैं दफ्तर पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे पुस्तक लिखना है और जब तक मेरा पुस्तक पब्लिश नहीं हुआ और सारे पैसा आने नहीं लगेंगे तो सभी भूखे सो जाएंगे. नहीं, that's not, nobody would say that is the way to fulfill your dharma. Right. So that's a very important point. A lot of people these days are actually really struggling in their jobs, in their careers, because they're saying, ki, oh, I don't feel it's my passion. Well, to theek hai. Do your job, make the money, put food on the table. You've got evenings, you've got weekends. और ये भी सोचो कि क्या इतनी पैसा जरूरी है? If you feel that your job is not necessarily your calling or your passion, can you learn to live more simply? ताकि कम से कम इतनी घंटों दफ्तर पे spend नहीं करना पड़ेगा. कम से कम you just have to do it in order for there to be enough कि एक छत हो, बारिश हो रही, छत होना चाहिए, ठंडी के मौसम में कपड़ा होना चाहिए, खाना होना चाहिए. I think sometimes about those people on the side of the road who are chopping, by hand, hammering the big rocks into little rocks to make the road. सड़क पे जब जा रहे खासकर हिमालय में, सड़क के बगल में, all of the poor people are hammering the rocks. और मैं सोचती हूँ उसके बारे में कि naturally कहीं ऐसे नहीं लिखा हुआ था you will be a rock hammerer. Hammering rocks वो आपका धर्म है. लेकिन maybe उस आदमी सुबह से रात तक is hammering the rocks even more than he needs to ताकि उनकी बेटी सड़क से बैग नहीं करना पड़ेगा and she can go to school. Maybe उन्होंने एक अंदर की वचन लिया कि मेरा बेटी वो भीख नहीं मांगेगी, वो स्कूल जाएगी. And therefore, he is hammering rocks sunrise till sunset even more than other people. ताकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा आएगा, ताकि बाकी बच्चों की तरह उनकी बेटी भीख नहीं मांगने पड़ेगी. Therefore, we understand, अच्छा, उनका धर्म had nothing to do with hammering rocks. His dharma was, he was going to be the first father to send a daughter to school in their slum. He was going to be the one to set the model. Just say other daughters then said to their fathers, kya मैं भी जाऊं? ये जा रही kya मैं भी जाऊं? And other fathers got the courage to say, हाँ, बेटी को भी पढ़ाई करना है. So when we think about our dharma, our purpose, it's really important कि इतना याद रखो कि ऐसे नहीं है that your dharma pays you a living. Some dharma, some purposes, some passions also pay a nice wage. Some of them don't. Yeah. And so maybe you're going to need something to pay the bills. Taki weekends pay, evenings, mornings. You can make your music, you can do your writing, you can create your art, you can write poetry, whatever it may be. So that's a really important point, is don't expect that your passion, your purpose, your dharma is necessarily going to pay the bills. Secondly, when we think in terms of the question that came in, how to know that something is an attraction or a calling. Calling comes very deeply. It's like saying, how do you know you love someone versus how do you know that you just want to go to bed with them?
We know. Now, we certainly may rationalize it. We may give ourselves all kinds of excuses for it. But under it, we know there is there is an intelligence that we have inside of us, a wisdom that we have inside of us. Just say, if we're really honest, we know. I really love that person, soul to soul love, or this is just lust. In the same way, ask yourself deeply, this is really my soul's calling? Or I want to do it just because kal maine dekha Facebook mein कि जिसको मैं फॉलो करती हूँ और जिसको मे बी मैं थोड़ा सा आइडलाइज करती हूँ या जिसको मुझे लगता है कि ओ मेरा जीवन अगर ऐसे बन जाए तो कितना अच्छा लगेगा. This person is doing something, तो suddenly फिर मेरे मन में आए, that is an attraction. A soul's calling is that which, if you don't answer it, नींद नहीं आती है, ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं. It's with you all the time. It doesn't fluctuate. It's also something that if you are not listening to it, it impacts every other area of your life. You feel very stuck. So what I would say is truth lasts. In the same way that you would tell someone with a relationship who says, oh, I met this boy or this girl, mujhe shaadi karna hai. Kab mila? 2 din pehle. You say, chalo, thodi der ruk jao. Agar sachmuch pyar hai, sachmuch soulmate hai, to 6 mahine, 8 mahine, 9 mahine, 1 saal ke baad, that person will still be your soulmate. Right. It's not going to go away. You don't lose anything by being patient, by slowing down. When truth is there, truth does not require us to be impulsive. Truth does not require us in this moment. Drop everything and only do that. That's passion. That's desire. That's attraction. That's impulse. And I'm not saying those things are bad by any means, but just when you're making life decisions, rather than a decision of just where are you going to go for holiday, or what are you going to have for dinner, or what crazy outfit are you going to wear today. When you're making life decisions, it's really worth giving it some time. Because if it's true today, and really true, what I call capital T truth, lowercase t truth is कि आज 19 तारीख को है, it's December, मेरे लिए California में सुबह 8 बजने वाले के आसपास. That is our lowercase t truth. मतलब it's true, I'm not lying to you. But it's not going to be true in an hour. Right. It's not going to be true tomorrow. And it's not even true right now all over the world. It's only true in my immediate intersection of time and space. That's lowercase t truth. Capital T truth is going to be true tomorrow. So sit with it. Meditate on it. Feel it. You'll know. A caterpillar knows how to become a butterfly. A seed knows how to sprout and become a tree. A chicken knows how to get itself out of the egg. There is an intelligence in the universe. We have not been left out of that. We just have to connect to it. And in line with Neeleshji, all of what you're doing,
we have to be still Right. and quiet and slow enough to hear it. And you'll hear it. That's so beautiful. No, I'm trying to live this life, and I think a lot of what we're doing, whether it's slow content, whether it's slow products, and very soon slow experiences, ये ये मेरा ही मैं ही ऐसा हूँ, और मैं जी रहा हूँ ये जीवन, और कोशिश कर रहा हूँ कि उसको एक लार्जर लेवल पे करूँ। इससे पहले मैं अगला सवाल पूछूं, अपनी आप किताब का नाम बताइए, ताकि जो बहुत से लोग अभी देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे इसको जब इंटरनेट पे, तो उसको पढ़ सकें। So yes, I have a book called Come Home to Yourself. And it's a beautiful book published by Penguin, and it's a book of questions and answers. जैसे हम लोग यहाँ question answer कर रहे हैं, ठीक इसी तरह से परमार्थ निकेतन में, जहाँ मैं रहती हूँ ऋषिकेश में, परमार्थ निकेतन में रोज शाम की गंगा जी की आरती के बाद I have this beautiful blessing of leading the satsang. And satsang literally means in the presence of truth. तो लोगों के साथ बैठ के लोग अपना दिल की questions पूछते हैं, और कहीं से वो answers आते हैं. मुझे लगता है not they come from me, but they come through me. So these questions and answers have been compiled into this book published by Penguin, as I said, called Come Home to Yourself. It's available on Amazon.in. Neelesh, I assume that there's some way where we can get a link into wherever you're seeing comments and stuff from. Absolutely, we will. People can get it. They also can just go to my website, which is sadhviji.org, and all of the details. Sadhviji with a W or it's V? No, with a V. sadhviji.org. Sadhviji.org. And there's links there to the book and to so much else. Great. No, my team will, I'm sure, put the link right now. आपने स्लो होने की बात कही, और I saw your tweet in the morning. I loved what you wrote in it, क्योंकि मेरी जो ट्विटर बायो की पहली लाइन है कि decency is my business model. उसके बारे में बात करी ना आपने, वादा किया था कि उसके बारे में बात करेंगे. क्या अच्छा इंसान हो के चीजें अभी भी की जा सकती हैं, या समझौते कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, और मुझ जैसे लोग जो असल में कोशिश करते हैं कि अच्छे लोगों के साथ खड़े हों, अच्छा काम करें, हम जैसे लोगों की कोई जगह है दुनिया में? It depends कि लक्ष्य क्या है. जी. हमको जब भी इस टाइप की क्वेश्चन पूछते हैं, हमें अपने से पूछना है, स्वयं से पूछना है कि मेरा लक्ष्य क्या है. यदि मेरा लक्ष्य केवल जितना पैसा मैं कमा सकूंगी मुझे कमाना है, कुछ भी हो जाए, तो naturally compromise तो करना पड़ेगा. With my morals, with my values, with my time, right, with my spiritual life, with my family life, सब कुछ मुझे compromise करना पड़ेगा अगर वो मेरा लक्ष्य है. लेकिन यदि मेरा लक्ष्य कि मैं एक ऐसा जीवन जीऊंगी कि रोज सोते हुए, सोने की टाइम मतलब when I'm going to sleep, I feel so glad that I got out of bed in the morning. और रोज उठकर मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि thank you so much for such a beautiful life. And रोज I've connected to God. I've connected to myself. I've done something that has helped others. I've lived in my heart.
I've contributed, chahe tan se, chahe man se, chahe dan se, chahe teenon se, back to this world. If that's my laksh, or ki mera mein roj prakash birthday jayega, that the light should get more and more, that my awareness should get more and more, the depth of my connection, the depth of my awakening should get more and more. कि मैं अपने आत्मा को पहचानूं, that I should be able to understand myself, कि मैं जीवन मुक्ति बन जाऊं, कि मैं डेथ के लिए वेट ना करूं मुक्ति के लिए, लेकिन जीते हुए मोक्ष मिलेगा. अगर वो मेरा लक्ष्य है तो फिर ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. Because then you should never do something जिससे अपने को शीशा में या भगवान को मंदिर में या आंख बंद करके स्वयं को या भगवान को देख रहे हैं, जिससे शर्म आती है. In that case, we must always live. And yes, you know what? I've seen across the world, there's so many people who make compromises, people who are not living according to morals and values. They always have excuses. They always say, karna parta hai, karna to hai hai, aapko malum nahi hai, aap bade aaram se आश्रम में रह रहे हैं, गंगा के किनारे रह रहे हैं, दुनिया तो ऐसी है, रह रहे हैं, आपको मालूम नहीं है. लेकिन मैंने पूरा दुनिया देख ली और अभी भी देख रही हूँ. And what I have seen is इतने लोग, और वो भी successful लोग, ऐसे नहीं है कि live according to morals and be poor या compromise and be rich. ऐसे बिल्कुल नहीं है. जी बिल्कुल. इतने लोग मैं खुद जानती हूँ, friends of mine, who are so successful, but they are successful in ways that are creative. They're successful in ways that they've been able to align their values, their ethics, and to become successful. But mukhya baat is unki laksh shuru se success nahi tha. Their laksh was simply being able to live a life in alignment with their values. And they were prepared कि अगर simple way में जीना है, that they are prepared to live more simply, ताकि they are able to live in alignment with values, able to have time to meditate, to have time to pray, to have time to do yoga, to have time to be with their families, to have time to be in nature. And then अचानक success आ गया. But मैं नहीं कह रही हूँ आपको कि success जरूर आएगी financial way में, but success will be there in your hearts. The happiest people in the world I know are not the richest by any means. They are the ones who have understood what life is about. There is a reason that the eyes shine of spiritual people, even जब कुछ है नहीं, जब मालूम भी नहीं है कि next meal कहाँ से आएगा, because that joy भीतर से आता है, और भीतर में कोई ऐसा compromise नहीं होना चाहिए. बिल्कुल, शायद इसी को फकीरी कहा गया है, ये जो इसी स्पिरिट को. बहुत बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके. एक बार फिर से इतने समय बाद हम लोग संपर्क कर रहे हैं. उम्मीद है जल्द आमने सामने भेंट होगी. और आप में से जितने भी व्यूअर्स अगर ऋषिकेश जाएं और नहीं जा रहे हैं तो जाने का बहाना बनाइए, क्योंकि शायद जैसे साध्वी जी के जीवन का रास्ता उधर से होके गया, कोई आपका भी आत्मिक प्रयोजन हो, आप वहां जाएं. आपको और कुछ नहीं तो कुछ समय के लिए शांति मिलेगी, कुछ अच्छा पॉजिटिविटी सकारात्मकता लेकर अपने वापस जीवन में जाएंगे.
और परमार्थ.org, मैं सही बता रहा हूँ साध्वी जी? परमार्थ.org इज परमार्थ निकेतन आश्रम का नाम है और वेबसाइट परमार्थ.org। जी। तो उम्मीद है कि इस तरह और अच्छे लोग जुड़ेंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने समय दिया और प्रणाम आपको, और हम जल्द मिलेंगे। स्वामी जी को मेरा प्रणाम कहिएगा। जरूर, 100%। जी।